अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आपका ख्वाजा मोइनुद्दीन। आज हम लोग बच्चों के लिए फिर से एक स्पेशल रेसिपी बना रहे हैं, मटन पुलाव। लेकिन लैम्ब फुल लेग्स को इस्तेमाल करके हम लोग आज ये रेसिपी बना रहे हैं। चलिए देखते हैं। सुनने के लिए बहुत इंटरेस्टिंग है और रेसिपी भी बहुत इंटरेस्टिंग है और नवाब्स किचन के स्टाइल में हम लोग आसानी से कैसे बनाते हैं देखते हैं। आज हम लोग लैम्ब लेग्स का पुलाव बना रहे हैं। उससे पहले हम लोग लैम्ब लेग्स पे एक निशानी बिठाएंगे ताकि वो जल्दी बॉईल हो जाए। अब इन सारे रान पीसेस को हम लोग टर्मरिक पाउडर ऐड करेंगे। उसके बाद इसको बॉईल करेंगे। प्रोसेस शुरू करने से पहले हम लोग इसमें बॉल गर्म होते ही घी डालेंगे। नेक्स्ट इसमें हम लोग रॉ स्पाइसेस ऐड करेंगे। नेक्स्ट इसमें हम लोग वाटर ऐड करेंगे। वाटर ऐड करते ही ये बॉईल होने से पहले ही हम लोग इसमें थोड़ा सॉल्ट भी ऐड करेंगे। इन लेग पीसेस को एटलीस्ट हम लोग 1 आवर तक अच्छी तरह बॉईल करेंगे।
सारे लैम लेग पीसेस परफेक्टली बॉईल हो गए हैं। इसको हम लोग पानी से अलग करेंगे और वो पानी भी हम लोग राइस उबालने में यूज़ करेंगे। अब हम लोग मेन प्रोसेस शुरू करेंगे। एज यूजुअल हम लोग भगोना गर्म होते ही इसमें फिर से घी डालेंगे। फर्स्ट इसमें हम लोग शाजीरा डालेंगे। नेक्स्ट इसमें हम लोग रॉ स्पाइसेस ऐड करेंगे। नेक्स्ट इसमें हम लोग स्लाइस्ड ऑनियंस भी ऐड करेंगे। ऑनियंस थोड़ा पकते ही हम लोग इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करेंगे। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट स्लाइस्ड ग्रीन चिली। इसी में ही हम लोग मटन मसाला भी ऐड करेंगे थोड़ा सा स्पाइसीनेस के लिए। नेक्स्ट हरा मसाला ऐड करेंगे, चॉप्ड कोरिएंडर और चॉप्ड मिंट लीव्स। जो पहले ही हम लोग लैम लेग्स बॉईल कर रहे थे वही वाटर इसमें हम लोग अभी ऐड करेंगे। लैम लेग्स ऐड करने से पहले हम लोग इसमें सॉल्ट डालेंगे। नेक्स्ट इसमें हम लोग ये बॉइल्ड लैम लेग्स ऐड करेंगे। नेक्स्ट हम लोग इसमें सोक्ड बासमती राइस ऐड करेंगे।
माशाअल्लाह बहुत ही अच्छी तरह पक गया है। देखते ही खाने को दिल कर रहा है। इसी रेसिपी को हम लोग बच्चों को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। हमें यकीन है कि आज का वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा, हमें भी बहुत अच्छा लगा। वीडियो देख के आपको कैसा लगा हमारे कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिए। और नवाब्स किचन तक पहुंचने के लिए या इन बच्चों तक कुछ ना कुछ पहुंचाने के लिए 786guardfoods@gmail.com पर मेल करिए, हम लोग आप तक आसानी से पहुंच जाएंगे। तब तक के लिए इन बच्चों के लिए और नवाब्स किचन टीम के लिए दुआ करिए। अल्लाह हाफिज़।